प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना कोविन वैश्विकमुपवेशनं सम्बोधितं कथितं च यत् अनेन वैश्विकसमुदायेन सह अनुभवानां विशेषज्ञानस्य संसाधनाञ्च विनिमयो भविष्यति। अस्मिन् कोरोना तत्सम्बद्धाः सर्वाः सूचनाश्च एकस्मिन्नैव पटले उपलब्धाः सन्ति। देशे कोरोना विषाणोः दैनिक संक्रमण संख्या अनुदिनं क्षीयते। देशस्य स्वस्थता प्रतिशतता 97.11 मिता सञ्जाता। कोरोना विषाणोः द्वितीय तरंगस्य क्षीणगत्याः प्रदेशेषु प्रतिबन्ध निराकरण प्रक्रिया तीव्रीभूता। केन्द्र प्रशासनेन वन संसाधनानां प्रबन्धे जनजातीय समुदायेभ्यः अधिकार प्रदातुं निर्णयो विहितः। जनजातीय कार्यमन्त्री अथ च पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मन्त्री अद्य नवदिल्ल्यां संयुक्त घोषणापत्रे हस्ताक्षरं करिष्यतः। केन्द्रीय मन्त्री अर्जुन मुण्डा अपि च प्रकाश जावडेकरः कार्यक्रमं सम्बोधयिष्यतः। परिसीमन आयोगेन केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीरस्य यात्राद्यतः। जम्मू कश्मीरस्य पुनर्गठनाधिनियमान्तर्गते प्रवर्तितायाः परिसीमन प्रक्रियायाः विषये सूचनानाम् एकत्रीकरणाय परिसीमन आयोगः जनपदानां निर्वाचनाधिकारिभिः सह संवादः करिष्यति। ब्रिटेन देशस्य प्रधानमन्त्री बोरिस जॉनसन जुलाई मासस्य 19 दिनाङ्के कोविड प्रतिबन्धानां समाप्तेः योजना घोषितवान्। तत्रैव जर्मनी देशेन इंग्लैंड पुर्तगाल भारत देशेभ्यः यात्रिणामागमने प्रतिबन्धः अपाकृतः। अपि च क्रीडावार्तायाम् अष्टवारस्य विजेता रोजर फेडरर इटली देशस्य लोरेंजो सेनगरं पराजित्य सर्वाधिक वयोवर्षीयः तृतीयान्तचक्रस्य प्रवेष्टा अभूत्। तत्रैव जोकोविच बार्टी कर्बर अपि अन्तिमेषु 8 प्रतिभागिषु सन्ति। अभिवादये अहमस्मि ऋचा। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अस्मिन्। अथ वार्ताः विस्तरेण। वसुधैव कुटुम्बकम् इति भावं चेतसि निधाय भारतम् अस्य निर्वहणं कथं करोति, अस्य दृष्टान्तं पुनरेकवारं दृष्टिपथे समायातम्। यदा कोरोना विरुद्ध संघर्षे भारतेन स्वप्रौद्योगिक्याः अनुभवकथनं वैश्विकपटले करणाय निर्णयो विहितः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कोविन वैश्विकमुपवेशनं सम्बोधयन् कथितवान् यत् भारते कोरोना सूच्यौषधेः प्रबन्धनाय विरचितं कोविन पोर्टल इति अनुप्रयोगम् अधुना वैश्विकं भविता। अनेन वैश्विक समुदायेन सह अनुभवानां विशेषज्ञानस्य संसाधनानां च विनिमयो भविष्यति। सहैव वयं विश्वे कोरोना विषाणुं प्रतिकर्तुं प्रचलितान् उपायान् ज्ञास्यामः। Right from the beginning of this pandemic, India has been committed to sharing all our experiences, expertise and resources with the global community in this battle. Despite all our constraints, we have tried to share as much as possible with the world. And we remain eager to learn from global practices. कोरोना विभीषिकां विरुद्धं प्रौद्योगिक्याः महत्वं प्रतिपादयता प्रधानमन्त्रिणा मोदिना उक्तं यत् सॉफ्टवेयर इति क्षेत्रे संसाधनानां विपुलता अस्ति। अत एव भारतेन प्रौद्योगिकी रूपेण कोविड अनुप्रयोगस्य सुविधाः अनावृताः। अस्मिन् कोरोना तत्सम्बद्धाः सर्वाः सूचनाश्च एकस्मिन्नैव पटले उपलब्धाः सन्ति। Technology is integral to our fight against COVID-19. Luckily, software is one area in which there are no resource constraints. That is why we made our COVID tracking and tracing app open source as soon as it was technically feasible. With nearly 200 million users, this Arogya Setu app is readily available package for developers. Having been used in India, you can be sure that it has been tested
in the real world for speed and scale. देशे कोरोना विषाणुः दैनिक संक्रमण संख्या अनुदिनं क्षीयते। कोरोना विषाणुः द्वितीय तरंगस्य क्षीणगत्याः प्रदेशेषु प्रतिबंध निराकरणं प्रक्रिया तीव्रीभूता। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालयस्य अनुसारं देशे विगते अहोरात्रे साकल्येन 97,739 नूतन प्रकरणानि पञ्जीकृतानि। सहैव 52,342 संख्याकाः जनाः स्वस्थीभूताः। देशस्य स्वस्थता प्रतिशतता 97.11 मिता सञ्जाता। तत्रैव देशे सूच्यौषध प्रयोगाभियानान्तर्गतं प्रायः 35 कोटितोप्यधिकानि कोरोना प्रतिरोधी सूच्यौषधानि जनेभ्यः वितरितानि सन्ति। प्राथमिक कक्षायाः विद्यार्थिषु आगामि 5 वर्षेषु 27,200 सम्पूर्ण मौलिक साक्षरतायाः प्राप्तिः संख्याज्ञानस्य अभिवृद्धिश्च। इदमुद्देश्यम् अभिलक्ष्य प्रशासनेन निपुण भारताभियानं प्रारब्धम्। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री रमेश पोखरियाल निशंकः ह्यस्तने नवदिल्ल्याम् आभासीय माध्यमेन अभियानमिदं प्रारब्धम्। त्रयवर्षात् प्रारभ्य नववर्षीयाणां बालानां अध्ययन परिणामे सुधार प्रयासः निपुण भारताभियानस्य लक्ष्यम्। अस्मिन् समये एका दृश्य श्रव्य सामग्री गीतम् अथ च निपुण भारताभियानस्य कार्यान्वयन सम्बद्धाः दिङ्निर्देशाः अपि प्रसारिताः। सर्वे प्रदेशानां केन्द्रशासित प्रदेशानां च विद्यालय शिक्षा विभागस्य वरिष्ठाधिकारिणः संस्थान प्रमुखाश्च अस्मिन् कार्यक्रमे उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात को भरपूर उजागर करती है कि स्कूल शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता कक्षा 3 तक यानी कि 3 वर्ष से 9 वर्ष तक मूलभूत साक्षरता एवं ज्ञान, जो संख्या का ज्ञान है, उसकी सार्वभौमिकता हर हालत में प्राप्त होनी चाहिए। हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात को लगातार दोहराती है और इस बात पर भी चिंता प्रकट करती है और उसका समाधान मांगती है कि मूलभूत शिक्षण को स्कूलों में ही पूरा किया जा सके। सेवानिवृत्तः न्यायाधीशः रंजना प्रकाश देसाई वर्यस्य आध्यक्ष्ये परिसीमन आयोगेन अद्यतः केन्द्रशासित प्रदेशस्य जम्मू कश्मीरस्य यात्रा विधास्यते। दलस्यास्य दक्षिणी कश्मीरे पहलगामेन सह 4 स्थानेषु जनपद निर्वाचनाधिकारिभिः सह उपायुक्तैः सह राजनीतिक दलैः सह संवादो भविष्यति। जम्मू कश्मीरस्य नियमान्तर्गते प्रवर्तितायाः परिसीमन प्रक्रियायाः विषये सूचनानाम् एकत्रीकरणं परिसीमन आयोगः करिष्यति। अस्मिन् 4 दिवसीय यात्रायां श्वः अनन्तनाग, कुलगाम, पुलवामा, शोपिया जनपदानां निर्वाचनाधिकारिभिः सह संवादो भविष्यति। गतवर्षे मार्च मासे परिसीमन आयोगस्य विरचनम् अभवत्। कोविड विभीषिका कारणात् अस्य कार्यावधौ वृद्धिरजाता। केन्द्र प्रशासनेन वन संसाधनानां प्रबंधने जनजातीय समुदायेभ्यः अधिकार प्रदातुं निर्णयो विहितः। जनजातीय कार्यमन्त्री अर्जुन मुंडा अथ च पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मन्त्री प्रकाश जावड़ेकरः अद्य नवदिल्ल्यां संयुक्त घोषणापत्रे हस्ताक्षरं करिष्यतः। घोषणापत्रमिदम् अनुसूचित जनजाति पारम्परिक वनवासी इति अधिनियमस्य प्रभावी रीत्या क्रियान्वितकरणाय निर्मितम्। अधिनियमः वनाधिकाराधिनियम रूपेण सामान्यतया प्रवर्तते। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडलस्य महत्वपूर्णः निर्णयः। शैक्षणिक सत्रं 2 अवध्योः प्रचलिष्यति। प्रत्येकस्मिन् सत्रार्धे 50% पाठ्यक्रमं पाठयिष्यते। प्रथम सत्रार्धस्य परीक्षा अस्मिन् वर्षे नवम्बर-दिसम्बर मासयोः भविष्यति। द्वितीय सत्रार्धस्य परीक्षा आगामिने वर्षे मार्च-अप्रैल मासयोः भविष्यति।
महाराष्ट्र विधानसभायाः अध्यक्षेण विधानसभा सत्रसमये सदने उपद्रवकरणस्य आरोपे सोमवासरे भारतीय जनता दलस्य 12 विधायकाः वर्षात्मककालाय निलम्बिताः सन्ति। एते विधायकाः विभिन्नेषु प्रकरणेषु सदने प्रशासनस्य विरोधं कृतवन्तः। महाराष्ट्र विधानसभायाः द्विदिवसीयं विशेषसत्रं सोमवासरात् प्रारब्धः अस्ति। विपक्षिदलस्य सदस्यैः विधानसभायाः अध्यक्षस्य निर्णयम् एकपक्षात्मकं कथितम्। ये 12 विधायकाः निलम्बिताः सन्ति तेषां नामानि गिरीश महाजनः, आशीष शेलारः, संजय कुटे, अभिमन्यु पवारः, नारायण कुचे, अतुल भातखलकरः, हरीश पिंपले, राजकुमार रावलः, राम सातपुते, योगेश सागरः, कीर्ति कुमार भंगड़िया, अणी पराग अलवणी। मेरे ऊपर शायद कल कोई प्रस्ताव भी ला सकता है, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, तालिका अध्यक्ष ने एक तरफा बात कही और उस पद पर बैठने के बाद वहां पर जो बोलते हैं उनको अधिकार है और उसके बाद हमको बोलने नहीं दिया जाता। और इसलिए मेरा मानना यह है कि उन्होंने पूरी बात नहीं कही है। हाँ, ये जरूर है, मैं इस बात को बिल्कुल मान्य करता हूं कि दो बातें हुई, लेकिन उसमें हमारी तरफ से किसी ने गाली नहीं दी और ये पहली बार नहीं हुआ। मैं 22 साल से विधानसभा में हूं, हर अधिवेशन में यह होता है। हम लोग जो विपक्ष में थे या वो भी विपक्ष में थे तो विपक्ष अध्यक्ष जी के यहाँ जाता है, 5 मिनट जोर जोर से बातचीत होती है, उसके बाद सब शांत होते हैं और हम गले मिलकर बाहर निकले। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत बात है। केन्द्र प्रशासनेन दिल्लीस्थम् उच्च न्यायालयं सूचितं यत् ट्विटर इंक इति सामाजिक संचार तन्त्रं नूतन संचार प्रौद्योगिक्याः नियमाः नानुपालयति। स्वीये शपथपत्रे केन्द्र प्रशासनेन उच्च न्यायालयं सूचितं यत् 2021 वर्षस्य नूतन संचार प्रौद्योगिक्याः नियमान् अनुपालयितुं 3 मासात्मकः समयः आसीत्। मे मासस्य 26 अन्तिमा तिथिः। एतदनन्तरमपि ट्विटर इंक इति सामाजिक संचारतन्त्रं समग्रतया अस्य परिपालनाय न प्रयतते। केन्द्र प्रशासनेन दिल्लीस्थम् उच्च न्यायालयं संसूचितं यत् 2021 वर्षस्य नूतन संचार प्रौद्योगिक्याः नियमः भारतदेशस्य विधित्वेन विरचितः। अस्यानुपालनं ट्विटर इत्यस्य कृते अपि अनिवार्यमस्ति। 52तमः 2021 वर्षस्य भारतीय अन्ताराष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवः नवम्बर मासे गोवा प्रदेशे आयोजयिष्यते। केन्द्रीय सूचना प्रसारण मन्त्रिणा प्रकाश जावडेकरेण ह्यस्तने अस्य 52तमस्य भारतीय अन्ताराष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवस्य विज्ञापनपत्रं पुस्तिका च प्रकाशिता। अस्मिन् चलचित्र महोत्सवे प्रतियोगी अनुभागे प्रविष्टिपूर्तेः समयः अगस्त मासस्य 31 तिथिपर्यन्तम् अस्ति। चलचित्र महोत्सवोऽयम् एशिया महाद्वीपस्य प्राचीनतमः अथ च भारतस्य महत्तमः अन्ताराष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवः अस्ति। प्रशासनेनोक्तं यत् प्रधानमन्त्री निर्धन कल्याण अन्न योजनान्तर्गते अस्मिन् वर्षे जुलाई मासात् नवम्बर मासपर्यन्तं प्रदेशेभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यश्च 8,87,98,00,000 कोटि मीट्रिक टन मितं खाद्यान्नं प्रदत्तम्। खाद्य सार्वजनिक वितरण विभागेन सूचितं यत् 16 प्रदेशेषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च भारतीय खाद्य निगमतः अन्नग्रहण कार्यं प्रारब्धम्। विभागेन कथितं यत् योजनेयं 32 प्रदेशेषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च प्रचलति, अन्येषु प्रदेशेषु अचिरमेव प्रचलिष्यते। 20 ग्रैंड स्लैम विजेता रोजर फेडरर विम्बल्डन स्पर्धायाः तृतीयान्तमे चक्रे प्राविशत्। ह्यस्तने स्पर्धायां तेन लॉरेंजो सेनिगो पराजितं नोवाक जोकोविच चिली देशस्य क्रिस्टियन गेरिनं पराजित्य तृतीयान्तिमे चक्रे प्राविशत्। सः 12 वारम् अस्याः स्पर्धायाः तृतीयान्तिमे चक्रे प्रवेशमलभत्।
भारतस्य श्रेष्ठ महिला मल्लयोद्ध्री मैरी कॉम अथ च पुरुष हॉकी दलस्य नायकः मनप्रीत सिंहः टोक्यो ओलम्पिक स्पर्धायाः उद्घाटन समारोहे भारतस्य ध्वजवाहकौ भविष्यतः। ओलम्पिक स्पर्धायाः उद्घाटन समारोहः जुलाई मासस्य 23 तिथौ भविष्यति। अगस्त मासस्य 8 दिनाङ्के स्पर्धानां समापनं भविष्यति। समापन समारोहे भारतस्य ध्वजवाहकः बजरंग पूनिया भविष्यति। मैरी कॉम लंदन ओलम्पिक स्पर्धायां कांस्य पदकं विजितवती। तया 6 वारं विश्व स्पर्धायां स्वर्ण पदकं प्राप्तम्। ओलम्पिक स्पर्धाः कोरोना विभीषिका कारणात् वर्षानन्तरम् आयोज्यन्ते। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।